Welcome back to your journey of learning, young champions. I'm so proud of you. You are sticking to your learning. This shows you are committed. Yesterday, we learned what is direct speech and what is indirect speech. One of my students has given me this clue that it is easy for us to understand if you explain it in this way. And that way is this. Suppose दो जनों की बातचीत आपने किसी तीसरे को बतानी हो, वो कैसे बताओगे? मीनिंग नहीं चेंज करना, लेकिन अपने वर्ड्स में जो बोलोगे दैट इज कॉल्ड indirect speech. So direct speech means within the inverted commas. Indirect means inverted commas रिमूव करके वहां that लगाया और उसके बाद आपने उसके वर्ड्स का टेंसेस के हिसाब से मीनिंग वगैरह सेम रखा, लेकिन टेंसेस के हिसाब से चेंजेस की, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. अब इसके अंदर के रूल्स क्या है, कैसे इसको चेंज करना, आज हम उस पर बात करने वाले हैं. प्लीज फोकस, रिलैक्स एंड बी अटेंटिव. जहां लगे इंपॉर्टेंट वहां नोट्स जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको अब क्लैरिटी देने वाला टॉपिक है. So sit straight, focus your mind, and let's begin. Before we start, let me just revise the previous class. Think about the answers in your mind and give me the answers. Are you ready? Yes, ma'am. So, when do we use inverted commas? In which speech? Direct speech. Shabash. So, when do we remove inverted commas? Indirect speech. Very good, you are right. So, now today we will learn reporting verb and change of tenses rule. These are very important for exams. So let us understand what is a reporting verb. For that, I want you to look at this sentence carefully and look it in this way that you could understand what I am asking you. So the sentence is, Ravi said, I am tired. Here, which word tells us that Ravi spoke? Said. Arey wow, very good. So this word is called reporting verb. So remember, the most important term to understand here is reporting verb. Reporting मतलब किसी के शब्दों को अपने शब्दों में कहना, verb मतलब action word. So किसी भी sentence में कौन सा word होगा जो reporting verb होगा? Example के लिए said, told, shouted, replied, whispered. These kind of words are reporting verbs. इन पे फोकस करना है, इसके ऊपर सारा इनडायरेक्ट स्पीच का दारोमदार अटकता है. दारोमदार मतलब उसका सारा स्ट्रक्चर इस पे डिपेंड करता है. सो फोकस ऑन द रिपोर्टिंग वर्ब, right? And for that, I'm going to give you this example. Look at this example and let us understand. And I'll give you a full chart about changing of tenses according to reporting verb. So today we will mainly focus on said and told because these come most in the exam. So remember this important rule. If the reporting verb is in the past tense, like said, told, asked, second form of verbs, है ना, then the tense inside the sentence will also change. This rule is called backshift of tenses. Backshift of tenses याद रखना, backshift यानी tense का change हो जाना. कब? जब आपका reporting verb past tense में होगा. उसके बाद look at this tense chart and it will help you understand. Read it loudly with me. Present into past, past into past perfect, will into would, can into could, and may into might. Kab? Now look at these examples. He said, notice कीजिए यहाँ पे word said, यहाँ पे reporting verb said है. और अब अंदर का sentence देखिए, he said I am tired. am tired प्रेजेंट टेंस है, पर फिर भी जब इसकी रिपोर्टिंग चेंज होगी, इसको जब आप अपने इनडायरेक्ट वर्ड्स में लिखोगे तो आप लिखोगे ही सेड दैट ही वाज टायर्ड. व्हाई? बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी. पास्ट में नोटिस करने वाली बात है. आई एम हैप्पी. नाउ इन इनडायरेक्ट इट विल बिकम ही सेड दैट. in place of inverted commas we will use that. We will use that in the tense of the sentence will also change into past tense. So am will change into was, and that sentence will become he said that he was happy. Now let us look at example number 2. She said I write daily. यहाँ अब narration में indirect में क्या हो जाएगा? She said that she wrote daily. Simple. She said that she wrote daily. ये इसका change होके narration ऐसे हो जाएगा. Now let us take another example to clarify it. They said we played well. In indirect, it will become they said that they had played well. Why? Because past tense changes into past perfect tense.
So remember, if reporting verb is in the past, the tense of the internal structure will also change. Now I am going to give you a golden rule. Write it in your notebook. If the reporting verb is in the past tense, then the tense of the internal sentence will change. And if the reporting verb is in the present, then the tense of the internal sentence will not change. For example, he says, I am tired. He says. Check the reporting verb here. ये प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे अब अंदर इंटरनल कोई चेंजेस नहीं होंगी. आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में ऐसे बनेगा, he says that he is tired. सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट, टेंस में कोई चेंज नहीं आएगी. इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए. अब एक और सेंटेंस में एग्जाम्पल चेक करते हैं. ही सेज आई एम हंग्री. रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो आपका सेंटेंस ऐसा बनेगा रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, ही सेज दैट ही इज हंग्री. वॉज नहीं होएगा, इज रहेगा. आंखें खुली, यस. क्या चीज नोटिस किया? सिर्फ दो चीजें नोटिस की. रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना है. रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो बहुत सारी चेंजेस अंदर इंटरनल टेंसेस में होंगी, उसको हम कहते हैं क्विक शिफ्ट ऑफ द टेंसेस, यानी वो भी सीट चेंज करेंगे, उनमें भी चेंज आएगा. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में होगा तो इंटरनल चेंजेस टेंस में नहीं होंगी, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने दैट लगाना है. These two rules very important. Don't forget to focus on them. इस वीडियो को 2 3 4 बार देखना. क्यों? क्योंकि ये जो चार्ट मैंने आपको दिया है ये आपको रिकॉग्नाइज करवाएगा, और आपको हमेशा दो ही चीज़ों पर ध्यान देना. रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो नो चेंज इन द टेंस, अगर पास्ट में है तो ये चार्ट से देखो क्या क्या चेंजेस होगी. रिमेनिंग वी आर गोइंग टू गो इनटू डिटेल इन द नेक्स्ट chapter. Don't forget to share it with your friends if you want them also to get good marks. With that, love from my side.